Yeah, so good evening, everyone. Today we are watching Dr. KK Mehta's Med Talk non-stop show. Welcome to the Med Talks Live Conversation That Matters, an educational awareness program supported by Eli Lilly. I am Dr. Rushabh Sagar Jain. I am your host for today's session. So now we start with the obesity management is definitely viewed only through lens of initial weight reduction, but many patients experience a plateau after achieving 5 to 7% of the weight loss. And this phase can lead to lot of frustration, reduced motivation, and treatment discontinuation despite the meaningful metabolic benefits which was achieved by the weight loss. Again, today's discussion will help us understand that the biological behavior pattern and the therapeutic reasons behind the plateau phase, while we also explore the evidence-based strategies to sustain this momentum and we support for long-term weight management outcomes. So let's start the session by welcoming our today's guest. So here are today's key updates on obesity. A recent global study has highlighted that childhood obesity is rising at the fastest pace in low and middle income countries, raising the concerns about the future and cardiometabolic disease burden and the healthcare challenges. Third point would be the research presented at the European Congress suggested long working hours may contribute to higher obesity risk by promoting chronic stress and stress related fat accumulation. The new global trends indicates that obesity rates are beginning to plateau in several developed nations, while developing countries continue to witness a rapid acceleration in obesity prevalence. A recent review has reported that obesity medications and bariatric surgery may lead a greater lean muscle mass loss as compared to the lifestyle based approaches which involves diet and exercise. So, emerging evidence suggests that the newer anti obesity medications may offer significant benefits in blood pressure control, providing an additional therapeutic advantage for the patient for obesity and hypertension. So, let's go for the topic of today why patients. So now let me introduce for guest for today Dr. KVS Harikumar. It is our privilege to welcome Dr. KVS Harikumar, an eminent endocrinologist and highly respected authority in the field of endocrinology, obesity, and metabolism. Again, diabetes, obesity, and metabolic disorders are his core, and he is currently serving as consultant endocrinologist at Magna Endocrine Center, again located in Hyderabad, with extensive clinical expertise and years of experience in managing complex endocrine and obesity related complications. And Dr. Hari Kumar is known for practical, patient centric approach and evidence based approach to his care. His contribution towards obesity awareness, metabolic health education, and physical training have made him a distinguished voice in the field of endocrinology. We are delighted to have him today at our stage. Thank you, Dr. Rishad. Greetings to all. Namaste. Namaste. So again, I would like to have a healthy discussion about today's topic. And what is actually, sir, what is actually weight loss plateau? Can you please explain? Okay. Namaskar, everybody. वेट लॉस प्लेट्यू इज समथिंग जो हम लोग वजन कम करना चाहते हैं, कम हो रहा है, लेकिन कहीं पे जाके अपना एफर्ट्स अटक जाता है. मतलब हमारा वेइंग मशीन जो है आगे नहीं दिखाता है, वो आगे दिखता नहीं है, तो
हमारे दिल में भी चुभता है और मशीन में भी चुभता है। इशू क्या है, इसको बोलते हैं वेट लॉस प्लेटू। जो हमारे कोशिश कर रहे हैं, ये अक्सर क्लिनिक्स में यही डिस्कशन होता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं वेट लॉस प्लेटू। इनिशियल डेज में थोड़ा सा फायदा होगा, जो भी आप काम करेंगे, चाहे आप एक्सरसाइज करो, दवाई लो या डाइट करो, थोड़ा बहुत एफर्ट, तो आपके एफर्ट के साथ थोड़ा सा फायदा मिलेगा। बट वो फायदा जब रुक जाएगा उसको बोलते हैं वेट लॉस प्लेटू। Okay. Sir, how does the body slow down this weight loss journey after the initial success which we receive during the initial weight loss journey? ओके, सी, जब भी हम वजन कम करने का जो जर्नी होता है, वेट लॉस जर्नी, उसमें काफ़ी चीज़ इन्वॉल्व होते हैं। एक तो आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत रोल प्ले करता है, और तीसरा जो है आपका ड्रग्स या जो भी आप ले रहे हैं उसके ऊपर भी प्ले करता है। दैट इज एज फार एज लॉस जिस वजह से हो रहा है। तीसरा होता है जो आप कौन सा कंपोनेंट्स लूज हो रहा है। जब भी किसी भी तरीके से, ये जो मैंने पहले बताया, इन तीनों में से जो भी यूज कर रहे हैं, आपका वजन कम होना है तो तीनों में से जो चीज होना है, या बॉडी से फ्लूइड भी कम हो सकता है, फैट भी कम हो सकता है, और मजल भी कम हो सकता है। ये तीनों जो चीज चेंज होते रहेंगे और उसके हिसाब से आपका वजन कम होगा। नो, प्लेट्यू कब होगा, क्यों होगा? प्लेट्यू क्यों होता है? जब भी बॉडी को ऐसे लगेगा, हाइपोथैलेमस करके दिमाग के अंदर एक सेंटर होता है जिसमें आपका पूरा बॉडी का अपिटाइट कंट्रोल, एक्सपेंडिचर कंट्रोल, ये सब चीज का कंट्रोल रहता है वहां पे। सेटेटी कंट्रोल बोलते हैं। मतलब हम जब खाया तो हमारे को ब्रेन को जो सिग्नल मिलता है, या हमको खाना है वो जो सिग्नल मिलता है, ये सब कुछ हार्मोन्स के वजह से होता है। तो ग्रिलिन करके जो हार्मोन होता है, जो स्टमक से निकलता है और ब्रेन को बताता है कि अभी खाने का समय आ गया है, आप खा लो। या फैट से एक हार्मोन निकलता है लेप्टिन करके, जो वो बोलता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा फैट हो गया, आप खाना बंद करो। तो ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंसुलिन भी होता है, GLP-1 भी होता है। ऐसे बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो आपके बॉडी को इंफॉर्मेशन और ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है कि अभी हमारे को रिक्वायरमेंट है। जब प्लेटो फेज तभी आता है जब ये ओवरवेलमिंग आपका लॉस हो गया है, तो बॉडी उसको जो है ओवर पावरिंग करता है, तो ग्रिलिन का सडनली बढ़ जाएगा, लेप्टिन कम हो जाएगा। तो बॉडी जो लॉस हो रहा है वो रिवर्स मैकेनिज्म अडेप्ट कर लेता है, तो इसलिए आपका प्लेटो हो जाता है। उसके वजह से हमारा लॉस ज्यादा नहीं होता है। सर, एक और बात है इसमें, अगर प्लेटो हो रहा है वेट लॉस जर्नी में, कोई प्लेटो आता है, is it a sign that your diet has stopped working for you or your exercise patterns have stopped working for you? या इट इज इम्पोर्टेंट, मतलब एवरी इंटरवेंशन, जो भी आप इंटरवेंशन वजन कम करने का कर रहे हैं, एक लेवल आता है जो वो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल रीच हो गया है। मतलब एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम यू कैन नॉट लूज विद दैट पर्टिकुलर मोडालिटी बियॉन्ड समथिंग। मतलब अक्सर आपने देखा होगा वेरी लो कैलोरी डाइट बोलते हैं, जो 500 कैलोरी खा के डेली काम चला रहे हैं या 800 कैलोरी लेके काम चल रहा है, बट उसके साथ भी कंटिन्यूअस वेट लॉस होता रहता है। they will also reach to a plateau at some point. So whenever a plateau is reached, whatever be the modality, you need to go up on it. You need to go up, मतलब मान लो सपोज आप 1000 कैलोरी खा रहे हैं, प्लेट्यू आ गया, यू मेक इट 800। प्लेट्यू हो गया, यू मेक इट 500। द सेम लॉजिक अप्लाइज टू योर एक्सरसाइज ऑल्सो, द सेम लॉजिक अप्लाइज टू योर मेडिसिन ऑल्सो। मतलब हम लोग जो दवाई शुरू करते हैं, कम डोज पे शुरू करते हैं, क्यों बढ़ाते हैं? ये प्लेट्यू को ओवरकम करने के लिए करते हैं। तो प्लेट्यू आया, ये मतलब नहीं कि आपने जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, या आपने जो किया है वो सही नहीं किया। ये आना आना ही है हर किसी को। प्लेट्यू आ रहे, एक पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट इट इज, आपका कम से कम बढ़ तो नहीं रहा है, वजन मेंटेन हो रहा है, तो ये भी तो अच्छी बात है। कम से कम उल्टा हो रहा है तो अलग है, बट प्लेट्यू हो रहा है तो मतलब आपने जो काम कर रहे हैं तो फायदा तो हो रहा है उसका। ये बहुत अच्छी बात कही आपने सर। जो हम अडेप्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का, उसको अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया ना। हम ये जानना चाहते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म अडेप्टेशन है ड्यूरिंग द वेट लॉस, जो हमारे बॉडी का अडेप्टेशन प्रोसेस है, हाउ डज इट वर्क? प्लीज उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी बताना चाहेंगे? ओके, सी, मेटाबॉलिज्म एडेप्टेशन क्या होता है? एक
जो भी बिना कुछ काम करे, मतलब एकदम 24 घंटा बिस्तर पे लेटे रहो, तब भी एक बेसल मेटाबॉलिक रेट करके एक चलता रहता है बॉडी का, मतलब हमको जिंदा रखने का एक मेटाबॉलिज्म जरूरत है, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। सांस ले रहे हैं, थोड़ा कैलोरी खर्च हो रहा है, जो आप पानी पिया, खाना खाया, उसको हजम करने के लिए कुछ खर्चा हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसका एक खर्चा हो रहा है। तो ये सब चीज जो है बेसल मेटाबॉलिक या रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। नो वेन एवर यू आर एट 100 kgs मान लो, तो बॉडी वेट के हिसाब से आपका 100 kg का इक्वलेंट बेसल मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। मान लो आपने नीचे आया 90 kgs का हो गया है, जब 90 kg का आया तो आपका मेटाबॉलिज्म भी उसी के हिसाब से बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो पहले आपको जो एक्सपेंडिचर दिख रहा था मेटाबॉलिज्म के वजह से, जो एक्सपेंडिचर हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज यू आर एट ए 90 kg नाउ। तो इसलिए वो जो प्लेट्यू होता है, जो बॉडी का जो एडजस्टमेंट है, सडनली आपका एपेटाइट बढ़ जाएगा वहां पे, बिकॉज हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट्स होते हैं वो ऑल्टरेशन होने में बहुत महीना साल लगते हैं। एक आदमी जो है 10 साल 5 साल ऐसे 1 kg एक किसी भी वजन में टिक गया है, तो उसको नीचे लाने में बहुत मुश्किल पड़ता, क्योंकि वो बॉडी पूरा उसका सेट पॉइंट वहां उस समय एस्टेब्लिश हो गया। तो इसलिए ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑल्टरेशन करना है तो वो बहुत दिक्कत पड़ता है। दैट इज वाई जब भी बॉडी ऐसे अडेप्ट कर लेता है तो उसको ब्रेक करके फिर वेट लॉस जर्नी में लाना बहुत मुश्किल पड़ता है। बट इसी के वजह से जो है एफर्ट्स और इंक्रीज करना पड़ेगा जब भी प्लेटो होता है। तो एब्सोल्युटली सही आपने अभी बताया कि बेटर बेसल मेटाबॉलिक रेट, हाउ डज इट फंक्शन और एडेप्टेशन कैसे होता है बॉडी का। हम ये जानना चाहते हैं कि मसल लॉस प्लेटो को, वेट लॉस जर्नी में जो प्लेटो आता है उसको कैसे कंट्रीब्यूट करता है, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू प्लेटो। see, actually technically muscle loss contributes to weight loss, not weight plateau. प्लेट्यू मतलब हम लोग मेंटेन्ड है, ठीक है। Okay. बट 99% क्या होता है, जब भी आप कोई भी वेट लॉस वाला प्रोग्राम में जाते हो, दे विल emphasize about your diet, they will emphasize about your physical activity, they will emphasize about your muscle building exercises, because usually क्या होता है, to prevent the muscle loss, हम लोग सारे पेशेंट्स को बोलते हैं आप कुछ रेसिस्टेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब जो मसल बिल्डिंग। Now, whenever you do these strength training resistance exercises, the muscle bulk slightly increases. Okay. So, it is actually the preservation of muscle because of the other activities what you are doing in addition to your weight loss program, which will help, which will contribute to a muscle plateau. Because आप खाली जो भी मतलब एकदम ओनली डाइट कर रहे हैं या ओनली मेडिसिन ले रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, दैट इज ए अनहेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट। यू विल लूज वेट, but more amount of muscle will go than the fat. But if you are doing exercises, if you are doing aerobics and if you are doing resistance, then what happens, some amount of muscle is preserved. So muscle preserved and weight loss हो रहा है, so there will maybe some plateau which is going to come. So that is how the muscle building may contribute to the plateau effect whenever there is a weight loss journey. सो अगेन जो हमें ये प्लेटो फेज है, हाउ टिपिकली कितना टाइम तक ये प्लेटो फेज लास्ट करता है, कैन यू हैव सम आइडिया अबाउट दैट। Yeah, this is most important actually. Plateau phase is not a fixed one, it is a dynamic one. Okay, like I will give you a simple example again, I'll go back to a 100 kg example. 100 to 95, the plateau may be just 1-2 weeks, but 95 to 90, the plateau may be 2 to 4 weeks. The closer you come to your target, the larger or the longer is your plateau. क्या होता है कि आपको सपोज मान लो किसी का आइडियल वेट 65 kgs या 70 मान लो, आप 75 से 70 तक आने में आपकी जान निकल जाएगी, आपको कम से कम 1-2 साल काम करना पड़ेगा। बट वही बंदा जब 100 पे होगा, 100 to 95 आने में 1 महीना काम करेगा तो आ जाएगा, क्योंकि उस समय जो प्लेटो है वो बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि वो बॉडी जो, जैसे अभी मैंने पहले बताया, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म एडजस्टमेंट्स जो होता है, वो जब आप
जो नॉर्मल वेट से बहुत दूर है तो वो सिस्टम भी उतना ही बिगड़ा हुआ है, तो वो ठीक होने में उतना इजीली हो जाएगा। बट जैसे जैसे आप नजदीक आते जाओगे उतना ही मुश्किल पड़ेगा ईच ग्राम कम करने में। शुरुआत में 1 kg तो एक दिन में कम हो जाएगा, बट बाद में 1 ग्राम भी कम नहीं होगा 1 महीना कोशिश करने के बाद भी, क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स वैसे होता। तो इम्पोर्टेंट मेरा कहने का ये मतलब है, प्लेट्यू फेज जो है फिक्स नहीं है। प्लेट्यू फेज जो है, आप अपने टारगेट वेट से बहुत दूर है तो कम प्लेट्यू है, और अपने टारगेट वेट के नजदीक है तो बहुत ज्यादा प्लेट्यू है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर टारगेट वैल्यू। So, should a calorie restricted or a calorie intake be reduced for further during the plateau phase? What do you have to say about this? See, actually speaking, yes, because हाउ डू वी ओवरकम ए प्लेट्यू, मतलब अभी, मतलब मैं वजन कम करना चाहता हूँ, अब हो नहीं रहा है, दैट इज अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, करेक्ट। तो अब हो नहीं रहा है तो जो भी मैं कर रहा हूँ उसको एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। तो एफर्ट डेवलप करना पड़ेगा, एफर्ट डेवलप करना पड़ेगा मतलब आई नीड टू रिड्यूस माय डाइट, आई नीड टू इंक्रीज माय एक्सरसाइज, आई नीड टू मे बी इंक्रीज माय मेडिकेशन, सो एवरीथिंग। सो इट इज ए overall consortium of activities which are required to be done whenever you reach a plateau. And there is no way a dip will happen on a straight line. There will always be plateaus in the management of weight loss, in the journey of weight loss. So the only thing is you need to increase the efforts in whatever be the field what you are putting, be it your diet, be it your exercise, be it your drugs. All those things are important whenever you are doing this. Okay. So, next we come up to, does this changing exercise, as you have already discussed, ki whether it is diet or exercise, we need to overcome that by doing it extra and putting those extra efforts. So, we have already got the answer for your question about improving your exercise pattern, improving your diet pattern will definitely contribute towards more weight loss or to overcome this plateau journey. My next important question is, does your protein intake during this phase affects your plateau phase, or does it accelerate or decelerate your plateau phase? What are Okay. your views, sir? See, it is important that you should look at your protein intake in the journey of weight loss. That is first point I would say. Normal, conventional for any adult will be requiring 1 gram per kg. So you need to look at that. जैसे मैंने पहले बोला, जब भी आप वेट लॉस में रहोगे कुछ पोर्शन आपका फैट जाएगा, कुछ पोर्शन मजिल जाएगा, कुछ पोर्शन फ्लूइड जाएगा। ये तो जो मर्जी कर लो, चाहे आप सर्जरी से वजन कम कर लो, चाहे डाइट से कम कर लो, ये तीनों में से कुछ कुछ पोर्शंस निकल जाएगा। अब किस पोर्शन ज्यादा निकलेगा, किस कम निकलेगा, ये हमारे ऊपर है और हम कैसे वो चाहते हैं। आप मजिल अच्छा बिल्डअप करना है और खाली फैट कम होना है तो यू नीड टू बी स्ट्रिक्टली मेंटेनिंग योर प्रोटीन इनटेक, यू नीड टू बी स्ट्रिक्टली मेंटेनिंग योर मजिल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। तो उसमें क्या होता है कि आपका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आपका फैट जाएगा, माइनॉरिटी मजिल जाएगा। सो दैट इज वेयर द रोल ऑफ प्रोटीन इनटेक कम्स। It will not accelerate the weight loss, it will help you in achieving a good weight loss or a healthy weight loss. We want the person or the patient to lose fat but not the muscle, because sarcopenia बहुत प्रॉब्लम है दुनिया में, चाहे मिडिल एज में हो, एल्डरली में तो हाई प्रॉब्लम, इवन मिडिल एज में भी बहुत प्रॉब्लम है। तो अनलेस यू हैव ए गुड फंक्शनिंग मजिल एंड द बोन, your longevity is not there. You may have lost the weight, but if you are restricted to a bed because of a fracture or because of a poor muscle mass, then what is the benefit of that weight loss? तो हम चाहते हैं कि अच्छी तरीके से, हेल्दी तरीके से वजन कम हो, आपके वजन, आपका मजिल, आपका बोन को अच्छा बरकरार रखते हुए ये करना पड़ेगा। Okay. So, again, diet, exercise. Again, if you see, sleep is also a very important role in having achieving a good and healthy weight loss and a good balanced life. So, how does the sleep affect the plateau progression? Uh, Please enlighten us with your views. See, lifestyle management has a paramount importance in weight loss. Lifestyle includes sleep,
diet, exercise, any addictions or habits. Okay. So out of all this, we discussed about the diet, lifestyle partly. Sleep has paramount importance because the cortisol करके जो हार्मोन होता है, which is a major hormone which determines how your metabolism is. It is cortisol is a essential stress hormone of the body. ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए. The moment you are awake, it is in the morning time, it is at the peak. In the night time, it is almost close to zero. When by this time 6-7 p.m. onwards, it is close to zero in the body. But if that is the body is twined, there is the internal clocks which are aligned to the external clocks. So this cortisol is supposed to go up in the morning because it will give you, it will break the muscle, it will break the glycogen, it will give you more glucose so that you are able to do your daily activities. बट क्या होता है, हम लोग अभी रात को ज्यादा काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट वर्कर्स है, या रात को सो रहे हैं 2 बजे 3 बजे, उठ रहे हैं 12 बजे. तो इसमें क्या होता है कि आपका ये जो कॉर्टिसोल का जो रिदम है वो डिसरेगुलेट होता है. जब कॉर्टिसोल का रिदम डिसरेगुलेट हो जाता है तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, मसल बिल्डअप जो है वो ब्रेकअप ज्यादा हो जाएगा, एंड मॉर्निंग फिटीग हो जाएगा. सो ऑल दोज, जब कॉर्टिसोल ज्यादा होते हैं उसको दूसरा हार्मोन कुशिंग्स डिसीज वगैरह बीमारियां बोलते हैं. बट these things subclinically will also lead to lack of weight loss. So most important thing, you need to have a proper diet, you need to exercise regularly, you need to sleep by 9 to 10 p.m. then only you will have a good amount of sleep. Different phases भी होते हैं sleep के अंदर जो cortisol production को differ करता है. But unless you have a good 6 to 8 hours sleep, your cortisol is not at the lowest level, and morning will be fresh and your body will be able to get more benefits out of the same system. So yes, definitely sleep has a very important role as mentioned by sir. I would like to say that if the patient is not having any weight loss or during the plateau phase, for example, and this plateau phase the patient doesn't see any weight loss, should they panic if the weight loss is more than for weeks together? See, actually प्लेट्यू नहीं आया तो प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ बीमारी के वजह से वजन जा रहा है. प्लेट्यू आया मतलब आपका हेल्दी तरीके से चल रहा है, जो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चल रहा है ये काम. क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, ऐसे फ्लैट एकदम ऐसे डिप करके कभी किसी का वजन नहीं कम होता. ठीक है, आप थोड़ा कम हो जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर कम होगा, फिर ऐसे आएगा. तो वो जो प्लेट्यू तो होना ही होना है. ओनली थिंग इज, जब प्लेट्यू फेज में आप आते हो तो आप अपने आप को जो है, यू हैव टू गो बैक एंड डू ए एरर एनालिसिस. ओके, मतलब कहाँ कहाँ मेरा गड़बड़ हुआ है, कहाँ कहाँ जो चीज मैं कंट्रोल कर सकता हूँ जिसके वजह से ये प्लेट्यू आया. ठीक है, तो यू कैन मेंटेन ए डाइट डायरी, यू कैन सी वेयर ऑल यू हैव स्किप्ड द एक्सरसाइज, यू कैन लुक एट वेयर ऑल यू हैव स्किप्ड द मेडिसिन्स, ऑल दोस थिंग्स. मतलब when you look at your error analysis during the plateau phase, you will know कि मेरे को ये चीज गड़बड़ हुआ है. तो then you work on those aspects, then your journey of down will start again. बट बिना प्लेट्यू के किसी का भी वजन कम नहीं होता. ये कोई बोल रहा है आपको तो आप झूठ बोल रहे हैं, बस क्लियर है. Absolutely. It was a great insight from you, sir. I would like to know, our audience would like to know, is there any role of medications during this plateau phase? Absolutely. That is why I said, see, plateau phase is there irrespective of the modality of weight loss. Whether you are doing it with diet, whether you are doing it with exercise, whether you are doing it with surgery or drugs in between. So the plateau has to happen, will happen, because the mechanisms of weight loss are different. शॉर्ट टर्म का अलग मैकेनिज्म है, लॉन्ग टर्म का अलग मैकेनिज्म है. तो कहाँ कहाँ भी वो जो सैचुरेशन आ जाते हैं तो वो प्लेट्यू फेज में आ जाते हैं. नो, इज देयर ए रोल ऑफ ड्रग्स? यस, बिकॉज एज एवरीबडी नोज नाउ, आई मीन पूरा दुनिया जानता है कि ओबेसिटी के लिए दवाइयाँ हैं. तो इसमें क्या है कि आपका जो भी दवाई ले रहे हैं, या खाली आप अपने लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन से आपका वजन कम हो रहा है, तो उसमें आपको क्या है कि जब प्लेट्यू फेज में आते हैं तब तक आप अपना
डाइट एंड लाइफस्टाइल से कोशिश करो, जब उससे काम नहीं बन रहा है तब दवाई शुरू कर दो, बिकॉज वेन एवर वी राइट मेडिसिन वी ऑलवेज इंसिस्ट दैट हैव यू ट्राइड एनफ. इफ यू हैव नॉट ट्राइड एनफ यू शुड नॉट कम टू मेडिसिन, फर्स्ट यू शुड ट्राई. जब आप ट्राई किया, जब आपका काम हो नहीं रहे, देन वी विल हेल्प यू, and we will help you, as I said, with a small dose of any injection. And when you reach a plateau, then we will escalate the dose of injection. That is why I said plateau to hona hi hona hai. Drugs will help. More efforts in whatever form of activity you are doing will help to overcome this plateau during the journey of weight loss. As sir, you previously mentioned about cortisol levels and cortisol hormone, which is also known as stress hormone. Can you enlighten us more briefly about how does the weight loss and the hormonal balance is affected, and why the cortisol levels affect your weight loss journey? See, cortisol is मतलब मोस्ट प्रॉब्ली स्टेरॉयड अब्यूज जो होता है, बाहर अक्सर देखा होगा आपने, मतलब किसी भी चीज़ में स्पेशली एलोपैथिक छोड़ के जो आयुर्वेदिक, यूनानी, ऑल दोज ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन दे अब्यूज स्टेरॉइड्स अ लॉट. बिकॉज स्टेरॉयड क्या है कि आपको इमीडिएट एक हाई देता है, मतलब इट्स लाइक ए एडिक्टिव ड्रग. यू आर लाइक स्टेरॉइड्स, मतलब यू आर लाइक गिविंग यू सम एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्टर, बट एनर्जी बूस्टर इज फॉर ए शॉर्ट टर्म. बिकॉज एज ए सेड स्टेरॉइड जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो आपका एसेंशियल हार्मोन है स्ट्रेस रेस्पॉन्स के लिए. नाउ नॉर्मल जब आप एज ए सेड इवनिंग टाइम में आपको कॉर्टिसोल बॉडी में होना नहीं चाहिए, बट आप सो नहीं रहा है, आप कुछ काम कर रहा है, रात को 2 बजे सो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो आपका कॉर्टिसोल लेवल है वो जीरो नहीं हुआ, वो प्रोडक्शन चालू है. जब प्रोडक्शन चालू है तो कॉर्टिसोल का जो नुकसान, एक्स्ट्रा जो कॉर्टिसोल आ रहा है बॉडी में, वो आपका मसल ब्रेक डाउन करेगा, वो आपका ज़्यादा फैट को बनाएगा, ज़्यादा ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेगा. तो उसमें क्या होता है कि आपका वजन बढ़ जाएगा. तो आपका जो दिन में जो कोशिश कर रहा है, बट इफ यू डोंट फॉलो ए लाइफस्टाइल, आपका काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने स्लीप इल्सो, उसको स्लीप शेड्यूल को भी बिगड़ा के रखा हुआ है. जब उसको नॉर्मल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फायदा होगा. जैसे वो कुछ पेशेंट्स आप देखा होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को आप खाली सीपैप मशीन देके आपको ठीक से 4 से 6 घंटा नींद दे दो उनको, उनका वजन कम हो जाएगा, बीपी कम होगा, शुगर कम होगा. क्यों होगा? खाली उनको टाइम पे सोने की जरूरत है. So if you don't sleep well, your cortisol will be on the rise, and if your cortisol is pathologically on the rise, you will gain weight, you will gain BP, you will gain sugar. Okay, it was a good insight from you, sir. We would like to know about what is a body composition and how it is more important than just the weight scale. Please enlighten us. See, body composition basically, जैसे पहले बोला, it involves dissecting the body into finding how much proportion of body is fat, how much is bone, how much is muscle, or we say lean body mass or fat free mass. Depending on the different machines, you get different terminologies. But maximum time क्या होता है कि the moment you say somebody weight obese, we make a decision based on the BMI, which is easily available. बॉडी केजी हाइट एंड हाइट का एक फॉर्मूला होता है, उसके वजह से BMI बोलते हैं. बट जब भी आप बोलो किसी भी आदमी को कि आप ओबीस है, वो बोलेगा नहीं जी मेरा तो पूरा बोन वेट है, मेरा तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हट्टे कट्टे बोन्स का है मेरा. तो आप बोन वेट कैसे मालूम करेगा? ऐसे तोलते तो है नहीं है. तो आप बोन वेट मालूम होना है, फैट कितना मालूम होना है, तो आपको बॉडी कंपोजिशन करना पड़ेगा. बॉडी कंपोजिशन में क्या बोलता है आपको? आपका फैट कितना है, आपका बोन कितना है, आपका लीन बॉडी कितना है. ठीक है. 99% ऑफ द टाइम जो भी बोलता है मेरा बोन्स हेवी है, वो बेकार है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टडीज हैव सेड बोन वेट इज ओनली बिटवीन 2.5 to 3 kgs. चाहे आप 100 kg का हो, 150 kg का हो, आपका बोन तो खाली 3-4 kg का ही होगा वजन, उससे ज्यादा नहीं होता. बाकी सब जो है वो फैट है या मजिल है. अब इन दोनों के बीच में हमको बेसलाइन एक ड्रॉ करने से फायदा क्या होता है कि बाद में जब हम किसी भी इंटरवेंशन से वजन कम हो रहा है तो वी कैन ट्रैक देम एंड सी कि आपका कौन सा पोर्शन ज्यादा जा रहा है, मतलब चाहे मजिल जा रहा है या फैट जा रहा है.
That will help in identifying correct way. Suppose किसी का मजिल ज़्यादा जा रहा है, then we can educate about the protein intake, we can educate about the muscle exercises, all those things are important. So body composition will give us further insights how to plan our weight loss journey. Okay. So, I would like to ask you about how, when you initiate any patient on anti-obesity medications, how do you approach the patient, and what is the role of counseling, and what is the role of plateau phase and the counseling together? Please enlighten us, sir. See, weight loss medications, definitely I would first ask, are there any symptoms of obesity? We have different staging systems to assess any target organ damage involved or any symptoms. We have some blood tests also to identify कोई बीमारी है, BP है, sugar है, cholesterol है, वगैरह वगैरह, fatty liver, first thing. Now, second important question is the patient keen to lose weight? Because आज आप सोए 60 kg, कल सुबह उठे 100 kg, ये तो होगा नहीं है कभी भी. It will be like a gradual going up. So the important thing to understand is we need to ask the patient as to what he or she has done before they reach this particular stage. So आपने कितना कोशिश किया वजन कम करने का? Because as I said, कोई मेडिसिन ऐसे काम नहीं करने वाला जब तक मरीज का एफर्ट नहीं होता. तो इसलिए क्या है कि डाइट लाइफस्टाइल कितना स्ट्रिक्टली फॉलो किया है वजन कम करने का. अगर कम किया है, कोशिश किया है, कम नहीं हो रहा है, then we do some blood tests to see some hormonal disorders, to see some other diseases which can contribute to a endocrine reasons for weight gain. And then वो सब नहीं है, then we counsel them for the medicines. Along with medicines, again diet and lifestyle also have to go part and parcel of them, and we counsel them accordingly कि भैया आपको शुरू ऐसे करना है, काम ऐसे होगा. आपको जैसे मैंने बोला कि प्लेट्यू फेज आएगा, बट प्लेट्यू आएगा तो वी विल सी रिवाइज द होल प्रिस्क्रिप्शन एंड देन मे बी इंक्रीज द स्केल ऑफ द मेडिसिन, स्केल ऑफ द एफर्ट्स, ऑल दोस थिंग्स. सो जब तक पेशेंट इज नॉट इंटरेस्टेड, patient has not adequately tried, we will not start anything. And second most important thing, we should tell them कि ये ऐसे जर्नी है, ये 2020 मैच वाला नहीं है, ये टेस्ट मैच वाला जर्नी है. क्योंकि अक्सर लोग ये चाहते हैं कि मैं आज लगा लूं, कल कितना होगा. कल कुछ नहीं होने वाला. कम से कम 6 महीने 1 साल तक तो आप वेइंग मशीन की तरफ देखो ही मत करके बोलता हूँ. So, next question for me is, how does patient assess non-scalable methods like नहीं or नहीं, the voice is not audible. Am I audible now? Yeah, better. Okay. So, how do this patient assess about the non-scalable improvements or the scalable improvements like waist hip ratio, waist reduction, or the sugar, or the blood glucose levels, or the blood pressure, energy levels, and how do they interpret this while being on a plateau phase and while being on a weight loss journey? And See, that how is do they where, interpret whether the reduction is positive side or a negative side, apart from the okay. normal range and normal values? सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी आप वेट लॉस जर्नी में हो, तो दैट फील गुड फैक्टर कम्स इनटू द सिस्टम. दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच पेशेंट्स नोटिस एक्चुअली. मतलब आई एम श्योर यू आल्सो वुड हैव नोटिस, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स मे नॉट हैव लॉस्ट द वेट, बट दे विल से कि सर हमारा जो ट्राउजर साइज है वो थोड़ा सा कम हो गया है, बट वेइंग मिशन तो सेम दिख रहा है और मैं ठीक से सो पा रहा हूँ. पहले मेरे को वो जो स्नोरिंग था, ब्रेथलेस था, जब मैं चल के आ रहा हूँ मेरे को ब्रेथलेसनेस इंप्रूव हो गया. आई एम एबल टू डू माई एक्टिविटीज. सो दीज आर सम ऑफ द डे टू डे थिंग्स व्हिच पेशेंट्स फाइंड देम इम्प्रूव, which may not translate into a measurable outcomes. मेजरेबल आउटकम्स होने में टाइम लगेगा, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होने में, शुगर कम होने में, बीपी कम होने में, ये मे बी टेक सम टाइम, बट डे टू डे उसके लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा. एटलीस्ट विद इन 1-2 वीक्स यू विल स्टार्ट नोइंग द डिफरेंस. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, उससे टॉलरेंस बढ़ेगा, फिजिकल स्टैमिना बढ़ेगा, तो दे विल बी एबल टू डू इट मोर. So the activities they will keep doubling up. Initially वो जो मतलब 5 मिनट चलने वाला आदमी अभी 50 मिनट चल रहा है without feeling breathless. So automatically that things will improvise the system.
And next is how important is the long-term follow-up and the long-term follow-up followed by a motivational factor during this phase for the patient? See, motivation and long term is the most important thing because, as I said, it is not a journey which you can finish off very soon. And the longer, the difficult. But only thing is, current day world, the motivation is easy because you're seeing the result. Like पहले क्या था, जो इंटेंसिव लाइफस्टाइल के साथ जो गड़बड़ था, आपको सस्टेन करना मुश्किल क्यों हो रहा था? बिकॉज आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे थे. जब रिजल्ट दिख जाएगा तो आपका मोटिवेशन लेवल भी उतना ही बढ़ेगा ना. बिकॉज when you are working for something and you are not getting any result, you are not keen to work further. So here now with the availability of new drugs, you are likely to get the motivation easy because मान लो आप suppose 100 से 60 में आना है, आप 100 से पहले क्या था कि जो मर्जी कर लो 95 पे आके रुक जाता था. बट अभी जब आदमी 80 क्लॉक कर दिया है तो ही नोस कि 20 केजी वैसे ही कम हो गया है. So that means there is a possibility that I can reduce further to 70 or 60. तो वो ऑटोमेटिकली अपना जो मोटिवेशन लेवल पीक रहेगा. And the moment your weight loss, that confidence level goes up, your personal outlook, interaction with peer group, social inhibitions, वो सब कम हो जाएगा. मतलब earlier they wouldn't interact with people, all those things. So अभी वो सब सिस्टम improve होगा तो ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा. But we need to handhold them at every point of their journey. That is most important. Okay. So now our next question is, can uh, how does the gender differentiation, whether it's a male or female, differentiate and translate into a real life plateau evidence? How much is the difference between male and a female plateau, and how do they overcome that differently in different sexes? See, gender wise, I am, matlab in practice, I have not seen much, but I mean, I can only say in my practice, females have generally lost a bit more than actually the males. Maybe because the females are quite high overweight than when compared with the male counterparts. Because as I said before, the you are very away from the target, you will lose more. That is the only difference. But otherwise, I say कोई खास difference नहीं है. And tolerance wise, both genders are fairly okay. Tolerance wise, I would give 55-45 favor towards males. Maybe their activities are different and their perception of this thing is different. But females wise, the tolerance is slightly a bit less. But कोई खास दोनों में ऐसे कोई ये मतलब ये दोनों डिफर करता है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, ऐसे कुछ खास है नहीं है. Do you find any plateau difference in a patient having comorbidities like hypothyroidism or a type 2 diabetes or any other comorbidities related to obesity? So, do you find that major difference, and how much more common is the plateau in among these patients? Is it Yeah, more it is common than a absolutely. normal healthy individuals? Yeah, it is very good. It is actually correct because most of the times क्या होता है, any of these uncontrolled diseases which are there in the background, which possibly would not have been received much attention, will pick up those plateaus because say थायराइड है, चलो इनिशियल रिपोर्ट आपने देख लिया है कि थायराइड नॉर्मल है, आप दवाई शुरू कर दिया है, जो चल रहा है इसका वेट लॉस का चल रहा है, थायराइड का पुराना चल रहा है. बट 2 months 3 months डाउन द लाइन you are supposed to revisit the thyroid hormone report also, because क्या होता है, you may expect that there is a reduction, but because of autoimmunity there may be increase in the requirement also. And if suppose suddenly you find an uncontrolled thyroid, you are not losing weight. Okay, so the same logic applies there. So suppose somebody is having insulin and he is having recurrent hypos and he is only bothered about weight, sir weight कम नहीं हो रहा है, but ये नहीं बोल रहे कि रात को डेली हाइपो हो रहा है और 2 स्नैक खा रहा है. तो ये आपको जो अलग बीमारी जो भी है उसको इम्पोर्टेंट टू रीएवैल्यूएट whenever you are not getting the benefit as expected with these things. So, how do patients on already on metformin or any other anti-diabetic medications like a Acarbus or a metformin or an SGLT2, how do they react to the weight plateau, or how
is the experience of weight plateau in amongst this patient. And if they are not added before, just merely this medications adding them with the anti-obesity medications will help the patient, or how is your experience about this? See, by and large, in a type 2 DM, there is definitely a bit less response than when compared with a simple obesity spectrum. Number one. Number two, for a simple obesity spectrum, we cannot add any other drug other than the weight loss agents because those are obviously not approved. Now, for a diabetes patient, most of the times patient would be on a SGLT2 inhibitor and metformin whenever a drug for the weight loss is added as an additional injection. Whether the drug is at a minimum dose or suboptimal dose, because at a there are most of the say empagliflozin is with 10 and 25 and dapa is with 5 and 10, and in that spectrum doubling up the dose will give you additional 10 to 15% calorie loss and weight loss. So you can consider doing that when you have reached a plateau phase because they are all non-hypoglycemic drugs. So you won't cause any problem as far as increasing or escalating the dosages are concerned. Sir, in this plateau journey, what do you feel? How much is biological and how much it is behavioral? I would say biological is 50%, behavioral is 50%. Because biologically also you cannot lose weight straight away. Okay. So there is alteration in the hormones, there is alteration in the set point. But behavioral also, like for example, you have lost from 100 to 90, you will feel more motivated. एक पिज्जा खाएगा जाके, तो behavioral भी आएगा because he wants to reward himself for the amount of loss which has happened. So behavioral action also comes into play to push the weight back or keep that plateau. So because you require a tremendous amount of motivation to continue to do what you have been doing. सो वो होता नहीं है. सो जब भी ब्रेक होता है दैट इज ए बिहेवियरल इंटरवेंशन. And what about emotional eating and stress eating and the eating, hedonic eating, this behavioral patterns of the patient? Do they influence the plateau? They reach the plateau at very early stage, or how is your experience about See, if somebody is on the drugs, generally that hedonic eating and all will go down. There is no issue. But if somebody is on only diet and lifestyle, hedonic eating plays a tremendous role in that issue. That 50-50, I would say, is somebody who is on the drugs. But if somebody is only on the diet and lifestyle, it is actually the behavioral which has got a major say in it because you don't actually have that benefit of the drug preventing that hedonic eating. So if somebody is on drugs, definitely it has a role to play, and it will not let you have. See, you don't derive any pleasure of eating, so nobody will snack at 2 a.m. It is only the deriving pleasure. It is not requirement. It is only for pleasure you are eating at that time. So if that pleasure is not there, you are not going to look around in the fridge for the snack. this? So, what are the motivational strategies? Am I audible, sir? What are the motivational strategies which we would like to tell to the patient so that they continue their weight loss journey and they overcome their plateau? What are those motivational things would you like to add on to the patient? See, motivational thing is you keep revising your target maybe every quarterly. I would say not monthly, every quarterly. Matlab, your weight loss journey, you keep a realistic target on a quarterly basis or a yearly basis that will help you keeping up the motivation, and devise the target keeping the doctor in loop. Don't devise it on your own because if somebody is at 150 kgs, he keeps कि next quarter में मेरे को 60 kg होना है तो वो होगा नहीं. But you keep 150 से 140 होना है next quarter में, which is easily doable. Okay, so that is where you need to, that motivation will work the moment you keep a realistic target and you try and achieve it. Okay, so that is why it is always important to keep the doctor in the loop of your journey and who will keep motivating you. And some of these nitty gritties, whenever you reach a plateau, that motivation will go down, and
Your doctor will be the one who will tell you why it is happening, and it is not a crime to have a plateau. So, what is the role of relatives, family members, and friends while on during the plateau week? Actually, the biggest culprit are the family members. I blame only the family members because the moment everybody starts to lose, इंडिया में क्या है कि सबको गोलू मोलू देखने का वो दिमाग में एक इंप्रेशन बन जाता है. द मोमेंट यू ट्राई टू लूज दे विल से कि अरे तू बीमार पड़ गया तो डॉक्टर से क्यों नहीं मिलता, तेरे को क्या हो गया तो चेकअप क्यों नहीं करवाता, वगैरह वगैरह. एंड द पर्सन इट प्लेस ऑन द साइक ऑफ द पेशेंट, अरे मैं क्यों बीमार लग गया. मतलब earlier they were happy looking, but suddenly they are looking slim, trim, like I'm sure you understand that faces of whatever be the brands which are there. So the issue is the family peer pressure, and family pressure puts that array I should not be losing more. Despite he may be a BMI of from 40, he has come to 30, but still he is quite significant obese. But the family pressure and peer pressure will put them to say कि नहीं जी अभी बस है. So that is where the biggest problem lies actually. And are there any parameters or a biomarkers to predict that which person is going to hit the plateau soon and which person is not? And at by what time phase the person is going to hit the plateau? Are there any biomarkers for that or any tests which the patient can do to know that or a Biomarkers, doctor can know? I'm not aware of any biomarker per se, but definitely if somebody is reaching a plateau, that is a time. I mean, initially I don't do a body composition, but when somebody is reaching a plateau, I do a body composition to see that where do they stand, and then I put more close focus on what they are eating, what they are exercising, and then maybe repeat that after a quarter and see what is happening, why it is not why he is not losing. uh, Beyond body composition and beyond looking at the common garden ailments like thyroid, diabetes, other things, I wouldn't do anything else as a biomarker for it. What do you feel that when we initiate an obesity treatment or when you explain about how to go ahead with the obesity management, uh, how important it is to tell the patient that this is a chronic problem? This has to be dealt with a lifestyle modification very significantly, even after your anti-obesity medication stops, to in order to maintain the weight which is lost, and that momentum should be maintained. How important it becomes because most of the patients tend to not adapt to the changes which they have got during the anti-obesity medications treatment, and thereby gains weight approximately up to 50% after the stoppage of the GLP-1 or any other obesity treatment. How to address that concern in spite of the patient telling us that we have changed the lifestyle very significantly, still I am gaining weight, and how to deal with that situation? See, it is. I agree. It is important. Okay, but it is only the repeated amount of counseling only will help at that point of time. And sorry, last portion was on the. Last portion was how to deal with the lost weight, the momentum which was obtained before, Okay, and sorry. now the momentum has stopped. As I said, repeated amount of counseling, and as I said, during the weight loss journey also, we emphasize about diet lifestyle. This will give you additional booster dose for the weight loss. The drug, whatever you're using, will give you additional booster that will give you the result and will motivate you to work further, and you will be able to carry on. Now when you have reached a certain stage, you don't require the additional booster dosages, so you may require to maintain on your own without a support of the drug. If somebody has been able to lose and maintain, there are very many number of people in the last at least couple of years we have seen they have lost significant amount, and now they are not even on a maintenance dose. Earlier the concept was of giving a maintenance dose, but if they have modified the lifestyle, it's like एक बार खून लग गया उसको जो वो चालू रहता है. ठीक है. The biggest problem is earlier that was not happening. They were not able to lose. So the moment they have lost, they have seen the benefit and they are able to modify everything accordingly. So this will help in achieving that objective. The what is according to you, sir? The last question which is coming up. What is the biggest mistake
what doctors make during counseling the plateau patients or during counseling of the obesity? What is the biggest mistake you feel that we make in day-to-day Biggest practice? mistake is to blame the patient, which most of the times we do, because we do with the diabetes journey also. The moment somebody comes with A1C 10%, अरे तुम आम खा के आया, अरे तुम कुछ करता नहीं है. In the journey of diabetes, everybody requires insulin. In the journey of weight loss, everybody hits a plateau. So it is no crime. It is only you look at the reasons why it has happened. If it comes after 3 months of starting therapy, it is expected. But if somebody is not losing right from the first week itself, I know that there is somewhere something is going wrong. So you need that course correction. So you plateau, you need to look at the factors, and you need to take the patient into confidence and explain that these are the things which you may need to further over oiling of the journey. But otherwise, it is the only way to help the patient reach the objective. Thank you so much, Dr. KVS Harikumar, for your wonderful and excellent insights, which will definitely help our audience and the patients to overcome their weight plateau journey. Thank you so much, everyone, for patient listening. Anybody, if they are interested, can join us for question answers if they want any further. And that's all for today. And we'll return tomorrow, 7 p.m., with another editor of the show. And keep watching Dr. KK Med Talks. Namaskar. Thank you so much. Good evening. Shabba khair. Shubh Ratri. Thank you, Dr. Shab. Take care. All the best. All of